We welcome you to She Leads the Way, a podcast series by Voluntary Action Network India. Hello again, our dear listeners. We are back with another episode of our podcast series with women leaders across the sector. She leads the way. Thank you for your support and commitment to this series. Like always, I'm Dr. Pallavi Rekhi, your host for the day. We have with us today Ms. Jaswant Kaur, Director, Fundraising and Growth Strategy at Protsahan India Foundation. She is also an esteemed member of the governing board of VANI. She has also headed organizations such as Dipale in the past. She was a corporate worker at the start of her career, but her zeal to contribute towards the society pushed her to join the development sector. There has been no looking back for her ever since. Welcome, Jaswantji. We are extremely happy to be talking to you today. Thank you so much, Pallavi, and the entire team at VANI for giving me this opportunity. Thank you so much, Jaswantji. So, शुरुआत करते हैं आपकी जर्नी एज अ वुमन लीडर इन द डेवलपमेंट सेक्टर. कैन यू शेयर समथिंग अबाउट दैट जर्नी, अभी तक की जर्नी जो आपकी रही है? So, well, my journey in the development sector has been as empowering for myself as it has been for most of our stakeholders. I mean, जिनके लिए हम काम करते हैं, मुझे लगता है कि मेरी जर्नी मेरे लिए भी उतनी ही सेल्फ एम्पावरिंग रही है. इनफैक्ट इस चीज़ के बारे में मैंने दीपालिया की एक किताब है फ्रूटफुल 40 जो कि 40th फाउंडर्स डे पे रिलीज हुई थी, उसमें यह चीज़ मेंशन भी की है. So the book says the article basically, this one article in that book, it says that it traces basically how a person who grew up in a small town called Chandigarh and who was intimidated by huge flyovers and serpentine roads of Delhi, could even rise up to the to the post of an executive director of an organization like Dipalya. For my first exposure to the development sector, to my first domestic flight, to the first international flight, I have several firsts that I really owe to Dipalya. मतलब मेरी जर्नी की बहुत सारी, मेरी लाइफ की जर्नी की बहुत सारी चीज़ें जो मैंने पहली बार की वो दीपालिया के साथ ही करी, और बहुत ही मज़ेदार जर्नी थी. और आफ्टर working with Dipalya for a little more than 7 years, I got an opportunity to work with a Pilani-based organization founded by a few alumni of its Pilani. हालांकि बहुत लंबा सफ़र उनके साथ नहीं रहा, बट फिर भी जो भी सफ़र रहा काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी लर्निंग वाला रहा मेरे लिए. और छोटे से उस सफ़र के बाद मैंने ये संस्था जो प्रोत्साहन इंडिया फाउंडेशन है वो ज्वाइन करी. सो कमिंग टू द चैलेंजेस, राइट, I would say, I mean, since I was a person who was working as a company secretary in the corporate world, तो पहले दिन ही बहुत बड़े challenges, I mean, बहुत बड़ी चीजें हुई थी मेरे साथ. In fact, shifting from Chandigarh to Delhi itself was a big issue and challenge. दोनों cities की अलग-अलग रहने का स्टाइल अलग है, बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर अलग है. तो पहले दिन ही मैं लेट हो गई थी. ज्वाइन करना था दीपालिया में. एंड किसी कलीग ने उस टाइम में मुझे बोला कि आई मीन मुझे नहीं बोला, किसी और को बोला, एंड वो बात मुझे पता चल गई कि ये सिंसियर नहीं है, ये टाइम पास करने के लिए यहाँ पे आई है. ऑल दोस काइंड्स ऑफ कमेंट्स आई हर्ड. और मुझे क्या पता था आप लीड करने वाले हो दीपालिया एक दिन. या एग्जैक्टली. सो सिंपली बिकॉज लेट इसलिए हो गई बिकॉज मुझे सच में समझ में नहीं आया कि मुझे कौन सा टर्न लेना है घर की तरफ सब निकलते हुए. एक फ्लाईओवर रास्ते में पड़ता था एंड सडनली भी हम लोग फ्लाईओवर चढ़ लिया जो कि नहीं चढ़ना था, इसलिए लेट हो गए. एंड बट एनीवेज, एंड आई मीन शुरुआत मैंने की अपनी फर्स्ट फील्ड विजिट से, जो कि और भी ज्यादा थ्रेटनिंग थी मेरे लिए. इन द सेंस आई वाज, मेरा कोई एक्सपोजर स्लम्स के साथ नहीं था उस टाइम पे, किस तरह के एनवायरनमेंट होता है. एंड आई इंसिडेंटली वेंट अलोन with one of my colleagues who were also new to the organization at that time. And दोनों डर के हम वापस आ गए.
फील्ड विजिट नहीं की हम लोगों ने उस टाइम पे कंप्लीट. Oh. एंड एंड द ब्लंडर दैट आई डिड वाज दैट आई एक्सप्लेन्ड इट टू वन ऑफ माय कलीग्स कि ये हुआ और हम लोग इसलिए वापस आ गए. Oh God. and and I was thinking and assuming that people will support, people will give, will come up and they will tell how to face those challenges. But that certainly did not happen. And then I thought कि ये तो मतलब कि बहुत ही depressing होता जा रहा है. But whatever I started thinking, and I now, because एक field visit मेरी हो गई थी, and then I started thinking कि how should I prepare myself before going to another field visit. So whatever they said, it certainly did not deter me. It did not discourage me. Instead, I thought कि what went wrong and what has to be improved upon. Right. So उसके बाद बहुत सारी फील्ड विजिट्स हुई, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें समझ में आई. हालांकि एज अ डायरेक्टर ऑफ तिपाल्या मुझे कोई जरूरत ही नहीं थी फील्ड विजिट्स करने की, बट इसलिए करना चाह रही थी सो दैट आई गेट टू नो अबाउट द डायनामिक्स, actual dynamics on the ground, and I should be able to do justice to the role that I have been given. I should be able to prepare realistic proposals by raising funds. That was the basic idea. But anyways, and I was very much mindful that why I left the corporate sector, and I certainly did not want to go back. And I was one who was very adamant कि I want to make it successful. So and I also knew कि ये शुरुआत के कुछ teething issues हैं जो कि मैं easily overcome कर जाऊंगी. And certainly उसके बाद जो हुआ, and I would say कि it was a completely changed Jaswant, that you now see me. Right. And I had a fabulous journey, fabulous endings at Depalia and even at Bitsa. Besides, मैं आमतौर पे जब सोचती हूँ वुमेन को लेके अंडर एस्टिमेट किया जाता है उनकी कैपेबिलिटीज को लेके. दे आर टेकन वेरी लाइटली, दे आर कंसीडर्ड वीक, उनकी आवाज को हमेशा दबाने की कोशिश की जाती है. और ऐसा नहीं है कि मेरे साथ नहीं हुआ, मेरे साथ भी ऐसे हुआ, बहुत बार हुआ. लेकिन मैंने ये ठान लिया था कि जो भी अपॉर्चुनिटी मेरे पास आएगी, आई विल नॉट लेट इट गो, आई विल ग्रैब इट क्विकली. The word no had no place in my dictionary when it came to making my choices. I made it a point that whatever may happen, my voice should be heard. So and gradually जो मैंने realize किया, लोगों को समझ में आना शुरू हुआ कि किस तरह की वैल्यू सिस्टम्स, किस तरह की स्किल्स जो मैं लेके आती हूँ अपने साथ. And it became very easier thereafter. Yeah. And लोगों ने भी आपको सीरियसली लेना शुरू कर दिया थोड़े टाइम के लिए. Yes. And not only that, there were people who gave me extraordinary support as well. There were people who actually wanted me to be in the organization, wanted to continue for long, because they could see that the kind of positivity I bring in the organization. Yeah. Right. So आपकी जर्नी से ये सीखने को मिलता है कि डिटर्मिनेशन एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है. राइट. डिमोटिवेट नहीं हो जाना है. Yes, बिल्कुल, एब्सोल्युटली. एंड नॉट ओनली दैट, जो एक इम्पोस्टर सिंड्रोम से हम अक्सर महिलाएं मतलब फेस करती हैं, हाउ टू ओवरकम दैट इम्पोस्टर सिंड्रोम इज वेल. राइट, बिल्कुल ठीक. तो जसवंत जी, विमेन लीडर्स की जहाँ तक हम बात करें डेवलपमेंट सेक्टर में, आपको क्या लगता है कि कुछ यूनिक पर्सपेक्टिव्स या कुछ यूनिक स्किल्स या कुछ यूनिक चीजें हैं जो वो सेक्टर में लेकर आती हैं? एब्सोल्युटली यस. आई वुड से कि हालांकि जो सोसाइटी है हमारी, इट इज मेल डोमिनेटेड सोसाइटी. पितृसत्ता में हम लोग रहते हैं जहाँ पे पुरुष प्रधान समाज है. और जो women है, they have mostly be on the receiving end, but still they bring quite a different perspective to the table, I would say. So अगर एक बार उनको मौका दिया जाता है, क्योंकि सदियों से दबाया गया है, तो एक बार अगर मौका दिया जाता है तो वो वापस कभी मुड़ के देखती नहीं है. इतना तो मैंने ऑब्जर्व किया है.
एंड जो डेमोग्राफिक्स की इंटरसेक्शनैलिटी है, आई थिंक वो वुमेन से बेहतर कोई और नहीं समझ पाएगा, क्योंकि उन्होंने वो जो एक्सपीरियंसेस हैं वो जिए हैं। चाहे वो बहुत ही अच्छे आई मीन फाइनेंशियली वेल ऑफ बैकग्राउंड से हों वुमेन, या बहुत ही गरीब तबके की हों, they all understand these intersectionality very well. I mean, most of the time they have faced those discriminations, and that's what, make them unique and different. Right. और दूसरा, शुरू से उनको जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनको नहीं दी जाती है, इसलिए मैंने जो ऑब्जर्व किया है, they tend to be more innovative and analytical when it comes to resolving problems, and they also display high integrity and honesty. Right. They are more empathetic. So जब भी कोई पॉलिसी लेवल डिसीजंस लेने होते हैं, या पॉलिसी लेवल पॉलिसीज बनानी होती हैं, या इम्पोर्टेंट की डिसीजंस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लेने होते हैं, तो दे कम अप विद सर्टेन ए वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव, which I don't think so anybody else can bring to the table. No, और अगर हम देखें, बहुत सारी रिसर्च रिपोर्ट्स भी इन चीज़ों पे पब्लिश हुई हैं कि किस तरह से जेंडर डाइवर्सिटी और जो इंक्लूसिव कल्चर्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस की ग्रोथ में किस तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं। इनफैक्ट अगर मैं सही से अगर मुझे याद है, तो एक रिपोर्ट में इतना भी मेंशन किया गया है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पे विमेन को लीड करने की अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं, they are 6 times more effective than a male-dominated organization. Wow. So And more inclusive. Right, absolutely. So it itself is so empowering. ये thought कि एक पुरुष प्रधान संस्था के मुकाबले जहाँ पे inclusivity, I'm not even saying that these are women-led organizations. I'm saying जहाँ women और gender diversity को तवज्जो दिया जाता है, तो 6 गुना ज़्यादा impactful रहती है। Wow. Yes, and ना सिर्फ इतना, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, वुमेन अपने थॉट प्रोसेसेस को बहुत पावरफुली प्रेजेंट करती हैं, डेवलपमेंट इश्यूज को बहुत पावरफुली प्रेजेंट करती हैं, अच्छी फंड रेजर्स हैं, और ना सिर्फ अपनी टीम की इफेक्टिवनेस, बल्कि अपने नीचे जो अपने जो जूनियर्स हैं उनको डेवलप करने के का पर्सपेक्टिव उनके अंदर हमेशा होता है कि अपने साथ में किस तरह से लोगों को लेके चलूं। Right. So I feel that yes, there is an increased necessity, increased demand for promoting diversity, inclusion and equity. Right. Right. अगर आप Exactly. देखें तो अभी इन मुद्दों पे जो बातचीत है वो बहुत ज्यादा होनी शुरू हो गई है। DII एक अलग ही एक स्ट्रीम, एक डिपार्टमेंट ज्यादातर संस्थाओं में बन रहा है। Awareness भी ज्यादा हो गई। Yes, absolutely. और अगर एक रिसेंटली एक हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू रिपोर्ट भी रिलीज की गई है, हालांकि वो कॉर्पोरेट सब सेक्टर से रिलेटेड है, जिसके अंदर एक ग्लास क्लिफ की बात की जाती है। तो इन द सेंस इस ग्लास क्लिफ का तात्पर्य ये है कि जब कोई संस्था डूबने वाली हो या बहुत बड़ी मुसीबत से गुजर रही हो, तो उसको भैया लेडीज को आप लीड करने के लिए दे दीजिए। Wow. That is the perspective that generally people have for women, that जो टूटी हुई चीजें हैं आप उनको दे दो भैया, women को दे दीजिए, and perhaps they will be able to either उसको तो और डुबा देंगी, then they will be a path of criticism. अगर अच्छा होता था तो obviously then the male will say we gave them an opportunity, we gave them an right. So that's how generally women leadership is looked at. आपके एक्सपीरियंस में विद लीडरशिप पोजीशन पे पहुंचने के लिए जो विमेन हैं हमारे सेक्टर की, उनको क्या कुछ यूनिक चैलेंजेस या बैरियर्स फेस करने पड़ते हैं अगर जब तक वो लीडरशिप पोजीशंस पे पहुंचने की कोशिश कर रही हो? ओके, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ग्लास क्लिफ के बारे में जिक्र बिल्कुल, मैं ग्लास सीलिंग के बारे में जिक्र करूंगी। तो ग्लास सीलिंग essentially
इस तरह के अनएक्नॉलेज्ड या इनविजिबल कंडीशंस या सर्कमस्टांसेस होते हैं जो कि विमेन की ग्रोथ को इम्पीड करते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, हर्डल्स बनते हैं, स्पेशली जबकि वो ऑर्गेनाइजेशन लेडर्स और हायरार्की में क्लाइंब करने की कोशिश करते हैं या ऊपर जाने की कोशिश करते हैं. So these thoughts are essentially entrenched in the belief that women are weak and they are best suited to the traditional household jobs. And there are high expectations when women come when it comes to looking at children, elderly, or essentially maintaining work-life balance. So ये कुछ चीजें जो हैं वो women के लिए certainly hurdle बनती है, चाहे वो जितनी बड़ी ही पोजीशन पे हों. अल्टीमेटली उनको जज एज अ केयर गिवर ही किया जाएगा. इनफैक्ट अगर आपने इंदिरा नूई की किताब पढ़ी हो, माय लाइफ इज इन फुल, उसमें she also mentions that she was given a huge promotion in PepsiCo. She came with मतलब इतनी खुशी से वो घर आ रही हैं, लेकिन उनकी मदर इन लॉ बोलते हैं कि ये दूध ले आओ जाके. Right? These are the circumstances, these are the hurdles that generally women they face. Yeah. राइट, वेरी ट्रू. एंड ये आज के जमाने में जब इतनी ज्यादा बढ़ोतरी हो गई है, इतनी ज्यादा अवेयरनेस हो गई है, इतना ज्यादा एवोल्यूशन हो गया है, फिर भी ये चीजें अभी भी कहीं ना कहीं हैं. Right. Absolutely. राइट. तो आपने भी कुछ ऐसे बैरियर जरूर फेस किए होंगे जब आपने ज्वाइन किया था ये सेक्टर. तो आपने कैसे उनको ओवरकम करने की कोशिश करी? आपको किन लोगों का सपोर्ट रहा? तो मैं ये कहूंगी कि I mean there are two phases in my life. एक तो शादी से पहले और एक शादी के बाद. राइट. तो I mean before marriage और ये डेवलपमेंट सेक्टर के साथ ही मैं अपनी लाइफ के बारे में ही बात करूंगी. Before marriage, I was living in a very different kind of circumstances. मेरे में बहुत आर्थिक और फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स थे, तंगी थी. So and I was told कि Jaswant, you are the eldest, you have to lead the house. Right. So that was the case. So I would say that was circumstantial. तो मैंने जो भी डिसीजंस लिए अपने हिसाब से डिसीजंस लिए. अगर कुछ रेजिस्टेंस थी घर पे तो I mean they were not able to overcome that resistance. These people were I would say they would मतलब वो नहीं मेरे को रोक पाए, कह सकते हैं इसको. And शादी के बाद I would say that because and not only that I chose my own life partner. और हमारी फैमिली में ये बहुत बड़ी एक चीज थी कि एक लड़की ने जाके सबके खिलाफ जाके she married a person who was not from our religion, not from our caste, तो इस तरह से. बट ये डिसीजन मेरी लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट रहा मेरे बाकी के सफर में, बिकॉज the person I chose, I know that this person is going to support me in whatever way possible. Right. तो वो जो डिसीजन था लाइफ का, जब मैंने चंडीगढ़ से दिल्ली भी मूव करना था, तो I would say my husband was one person who just said, Jaswant, do whatever you want to do. I am with you. Wow. So I mean he knew कि अगर Jaswant कोई डिसीजन लेगी तो I mean it will not be a useless decision, at least कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा, फैमिली के लिए भी अच्छा ही होगा. जी. तो इस तरह से I mean मेरा हस्बैंड का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है मुझे. Then my mother, I would say she has been an inspiration for me. जब मेरे फादर की डेथ हो गई थी तो she was a one person who went against the entire family and said कि मुझे चाहे छोटी सी भी जॉब मिले, मुझे जॉब करनी है बिकॉज मुझे अपने बच्चे पालने हैं. तो आई वुड से कि आई मीन ओवरऑल मेरी लाइफ में पर्सनल लाइफ में माय हस्बैंड, माय मदर, दे हैव बीन आई वुड से वेरी वेरी सपोर्टिव. मेरे रोल मॉडल्स रहे हैं. तो जो लड़कियों को आमतौर पे फेस करनी पड़ती है कि इन लॉज में फैमिली में कोई दिक्कत आ जाएगी, कैसे होगा, तो मैं आई मीन आई वुड से कि मैंने वो फेस करी नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज माय हस्बैंड वाज वन पर्सन who used to create a good balance between my in-laws and myself. तो वो एक अच्छा बैलेंस रहा. तो वो एक समस्या मुझे कभी भी झेलने को नहीं मिली. दूसरी चीज आई वुड से प्रोफेशनली I found several men who were actually very supportive.
including I would say J. Phillips sir, जो Dipala के CEO secretary रह चुके हैं. He, allowed me to do whatever I want to do. He gave me a lot of freedom. Gave me so many opportunities. There are जसवंत को मुझे कोई opportunity मिलेगी वो छोड़ेगी नहीं. ये तो I have already said that. So that ways I would say कि people have been very very supportive to me. Yeah. The support system बहुत strong था. Yes. And no support system strong था भी और उसको build भी किया गया. ऐसा नहीं कि पहले से ही था. Convincing आपको reasons देने हैं हर जगह पे. Even if like for instance I would say for the first time when I went to Mumbai, so my husband was very scared. But he knew that whatever reasons I gave, but he knew that she will overcome. She will manage. So that way, right. Yeah. So of course, family care तो रहेगी, but then he never stopped you. He always let you do what you felt was right. Absolutely. That's amazing. Yes. तो जसवंत जी, आपको इतने साल हो गए सेक्टर में, तो क्या आपको कभी मौका मिला है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को या फिर इंडियन सिविल सोसाइटी को एक ग्लोबल स्केल पे, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंट करने का? Yes, and I was really fortunate, I would say. In fact, ये मौका मुझे दीपालिया ने दिया था. दीपालिया की एक विंग स्टार्ट होना था यूएस फाउंडेशन में, एंड उस टाइम पे कुछ टीम मेंबर्स जो हैं दीपालिया के वहाँ गए थे फॉर द लॉन्च सेरेमनी, एंड आई वाज फॉर्चुनेट इनफ. Philip sir, in fact, that was the first time I got my passport prepared. पहली बार यूएस के वीजा के लिए अप्लाई किया था, इंटरव्यू फेस किया था, एंड आई वाज वन ऑफ द स्पीकर्स एट द इनॉग्रेशन. एंड मैं वो एक्सपीरियंस कभी भी नहीं भूल सकती. एक तो पहली यूएस की फ्लाइट थी, इंटरनेशनल फ्लाइट. यूएस की फ्लाइट वैसे भी बहुत लंबी ड्यूरेशन की होती है. नॉट ओनली दैट, मेरे को एक डर भी था कि मुझे कोई लेने भी आएगा या नहीं आएगा. So and then beach में it was not a continuous one flight, connecting flight लेनी थी मुझे, and airport थोड़ा distance पे था जो flight लेनी थी. तो फिर वो distance find out करना कि कहाँ exactly वो place है जाना. But it was a new experience for me. But then I found that people in the US, they are very cooperative. They help you. So, yeah. फिर इतने सारे लोगों के सामने दीपालिया के काम को प्रेजेंट करना, that what we do. Basically, it was a fundraising meeting to raise funds, tell them like what have been doing in front of entirely new people, जिनके बारे में मुझे पता ही नहीं था कि किस तरह की ऑडियंस है, क्या है. तो but at the same time I would say it was the presentation was very good. It was very well received by people. It was very satisfying and gratifying experience. Yeah. That's really nice. तो आपने as the head of Deepalaya उस मीटिंग को अटेंड किया था? Yes. Right. As executive director of Deepalaya. जी. तो जसवंत जी, आपके इस डेवलपमेंट सेक्टर में जब से आप हैं, आप क्या कोई सक्सेस स्टोरीज हमारे साथ शेयर कर सकते हैं वुमेन लीडर्स के, जिन्होंने आपके ऊपर और आपके काम के ऊपर, आपके काम करने के तरीके के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट क्रिएट किया है, या आपने उनसे कुछ एक्सपीरियंसेस, कुछ लेसन सीखे हों उनके काम से? हाँ, there are many women I would say उनसे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है. One is पूनम मुटरेजा मैम, then पूजा मारवाहा मैम है, हिमल मैम है जो कि हमारे अपने बोर्ड पे ही हैं. Then my dear friend who is also founder of Protsahan, Sonal Kapoor. Okay. So these are, and there are actually many names. The list is quite long. I would say. काफी सारे they are founders themselves. तो उनकी जो स्टोरीज हैं, लाइक कैसे एक छोटे से आइडिया से उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की थी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स एंड हर्डल्स फेस किए, कैसे ओवरकम किए, किस तरह उन्होंने जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इस मुकाम पे पहुंचाई. सो दीज आर स्टोरीज इन देमसेल्व्स आई वुड से. सम इवन फेस्ड लाइफ थ्रेट्स भी कईयों ने फेस किया, लाइक सोनल they were threatened actually. But then
they stuck to their purpose. I mean, उन्होंने हार नहीं मानी अपनी. They were consistent in their efforts. I mean, not only that, कि उन्होंने अपनी आवाज दुनिया को सुनाई. उनकी एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज किया गया. एंड उनकी आवाज आई मीन दबने नहीं दी उन्होंने अपनी आवाज. तो ये सब चीजें बहुत ही इंस्पायरिंग है. इनफैक्ट मुझे लगता है कि हमारी ही शिक्षण सेक्टर की जो वुमेन लीडर्स हैं, अगर हम उनके ऊपर कंपेंडियम बनाए एक, आई मीन देयर विल बी सो मेनी स्टोरीज टू टेल. राइट राइट या यस. इनफैक्ट ये पॉडकास्ट सीरीज इटसेल्फ will so many people will get to know about women, like कौन सी women they are working in the social development sector, what kind of work they are doing, what are their stories, what kind of issues they have faced in their life, how they have worked. So itself is a lesson. I think this will give inspiration to certainly many more women. Exactly. जी. आपको क्या लगता है जसवंत जी कि जो डेवलपमेंट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे कैसे कुछ हम पॉलिसीज अडॉप्ट कर सकते हैं या कुछ स्ट्रेटजीज अपना सकते हैं टू बी मोर सपोर्टिव एंड इंक्लूसिव एनवायरनमेंट बनाने के लिए फॉर वुमेन? आई वुड से दैट बिल्डिंग मोर इंक्लूसिव स्पेसेस या सेफ स्पेसेस जिसको हम बोलेंगे, कीपिंग इन माइंड कि अभी भी वुमेन के डुअल रोल्स हैं. लाइक उनको जो भी अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करना है उसके साथ साथ उनको घर का भी देखना है. राइट. सो कुछ इस तरह के सिस्टम्स क्रिएट किया जाए जो कि ना सिर्फ एडवोकेट करें सोसाइटल चेंज के लिए, सो दैट जो वो ग्लास सीलिंग की जो मैंने बात की थी, ग्लास सीलिंग की वो किस तरह से तोड़ी जा सकती है. एक तो ये कुछ एग्जाम्पल जरूर हम सोशल डेवलपमेंट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन से ले सकते हैं. जैसे क्राई की मैं बात करूँ अगर, तो ऑफ लेट आई केम टू नो कि क्राई ने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया था कि जो वुमेन आफ्टर मैटरनिटी they leave the organization, right? They don't join. उनको लगता है क्योंकि बच्चे को टाइम देना उनको ज्यादा इम्पोर्टेंट लगता है. So they came up with a policy of half day. So in case so they इस तरह की policies बनाई जो कि conducive है for I mean lactating mothers या mothers जिनकी बच्चे बहुत छोटे हैं. तो इस तरह के examples हम लोग showcase कर सकते हैं. ना सिर्फ इतना, मैं प्रोत्साहन का भी थोड़ा मेंशन करूंगी यहाँ पे. प्रोत्साहन एक्चुअली बिलीव्स इन well-being of their employees and most of their employees are women. तो well-being जो है ना सिर्फ एक थॉट है बल्कि उसको वैल्यू सिस्टम के अंदर, उसको कल्चर के अंदर बिल्ड किया गया है. तो एक ट्रस्ट सिस्टम बनाया गया है कि we trust our employees. At the same time they are held accountable, but in case at the same time every time whenever we are having conversations with our employees we make sure कि उनका अपना well-being जो है वो maintain रहे. क्योंकि I mean जो girls and women of child abuse हैं, victims of child abuse and survivors of gender based violence, इनके साथ काम करते हैं. तो इनकी रोज की इतनी कहानियां फील्ड में होती हैं कि I mean बहुत easy है burn out होना for our own staff. Right. उनकी mental health effect होना. So for that purposes also we are having a counselor on board कि जिसको भी लगता है कि किसी को counseling की जरूरत है तो the organization takes care of that. It's very inspiring. Right. Not only that, कि हमें लगता है कि हमारे जो growth trajectories हैं of all the women who are from field working on the ground, उनको हम इस लेवल तक किस तरह से पहुंचाएं कि वो लीडरशिप पोजीशन एक्वायर कर सकें. वो ग्रोथ ट्रैजेक्टरीज हम लोगों ने स्केल के विद इन प्रोग्राम डिजाइन के विद इन हम लोगों ने डेवलप कर रही है. और and it is work in progress every time. Right. when we sit on our strategies we always think कि किस तरह से रोल प्रोग्रेशन जिसको बोलेंगे हम अपने स्टाफ का इंश्योर किया जाए. ऐसा ना हो कि जिस एम्प्लॉय ने 12 साल पहले ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया है वो
फील्ड लीडर की तरह ही रह जाए या फील्ड सोशल वर्कर की तरह ही रह जाए। तो वो सब चीजें हम लोग टेक केयर करते हैं। सो इन द सेंस कि आई वुड से if you take some examples from such organizations and project them on a larger perspective or larger field, then I think जी काफी लोग समझेंगे कि किस तरह से we can have inclusive policies, better policies, where right women are not just considered as workers, but as leaders. राइट राइट वेरी ट्रू। ये बहुत ही आपने इंस्पायरिंग एग्जांपल्स दिए हैं और बहुत ही मतलब इनसे सीखने की जरूरत है बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को, यू नो, टू सपोर्ट एंड टू एम्पावर देयर वुमेन एम्प्लॉयज। Yes. तो थैंक यू फॉर दैट। तो जसवंत जी, आपको क्या लगता है मेंटरशिप और नेटवर्किंग क्या रोल प्ले करते हैं एम्पावर करने में वुमेन को, वुमेन लीडर्स को या वुमेन जिन्होंने अभी अभी सेक्टर ज्वाइन किया है उनको? I would say I'm sure आपने ये चीज जरूर सुनी होगी, networking is our network. जी 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 This is not just a saying, but that's the fact and truth. जितना आपका नेटवर्क बड़ा होगा उतना आप अच्छे लोगों को, सक्सेसफुल लीडर्स को मिलेंगे, एंड उन्हीं लीडर्स में से आपको समझ में आने लगेगा कि किन लीडर्स के साथ आप खुल के बात कर सकते हैं, किन लीडर्स के साथ आप बहुत ही ट्रिकी सिचुएशंस शेयर कर सकते हैं, बीट पर्सनल सिचुएशंस और बीट ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, राइट जो कि आपको मेंटोर के रूप में आप जिनको आप देख सकते हैं या मेंटोर बना सकते हैं. They will help you in building a path for yourself from their experiences. So it is basically learning from their experiences. They have already lived certain experiences, and how can we learn those from them? राइट Then right. कई लोगों के साथ how can we, we can always build some safe spaces where we can be easily, we are not afraid of being vulnerable. We can share, the kind of dilemmas that we are facing. So I think mentorship और networking के through हम लोग ऐसे safe spaces जरूर बना सकते हैं, and we can not only have one mentor, maybe different mentors for different purposes or different situations. Exactly. Right. So yes, it plays a huge role actually, because जहाँ कई बार and mostly it happens like like I spoke about imposter syndrome. हाँ जी तो ऐसे केसेस के अंदर जो आपके मेंटोर्स हैं, आपको आपकी ही स्ट्रेंथ्स के साथ रूबरू करा सकते हैं. दे कैन गाइड यू, बिकॉज आई फील दैट हर लीडर की जो ट्रेजेक्ट्री होती है उसके अंदर कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जो काफी लोगों ने फेस किया होता है, लेकिन उसके बारे में पता नहीं होता या लोग वोकल नहीं होते हैं. राइट. तो अगर कोई ऑलरेडी आपको ऐसा इंसान गाइड करने वाला मिल जाए जो कि आपको सही डायरेक्शन दिखाए, सही रास्ता दिखाए, तो नथिंग लाइक दैट आई फील. यस. राइट। तो जसवंत जी, यंग वुमेन के लिए जो ये सेक्टर ज्वाइन करना चाहती हैं उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे, उनको क्या कुछ ऐसे टिप्स देना चाहेंगे आप? So I feel that I'm not old enough to give tips, let's say, but still I would say कि जो मैंने अपनी लाइफ से अब तक ग्रैब किया है कि अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है वो तो इमीडिएटली ग्रैब कर लो, इससे पहले कि वो किसी और की हो. Don't राइट, वेरी ट्रू। don't be shy, don't be shy and don't be afraid कि लोग क्या कहेंगे या लोग क्या सोचेंगे. That let them think whatever they want to think. Be I would say be vocal, take a stand for yourself. कहीं पे भी आपको लगता है कि आपके सेल्फ रेस्पेक्ट आहत किया जा रहा है, तो आपको स्ट्रेटेजिकली, पॉलिटिकली करेक्ट होके किस तरह से उसको हैंडल करना है वो आना चाहिए आपको. क्योंकि अगर आप एक बार अपने आप को आहत होने दे रहे हैं तो आई एम डेड श्योर दैट यू विल फेस इट मेनी टाइम्स मोर. फिर आपका वो मेंटल हेल्थ जो है वो इफेक्ट होगा. इससे बेटर है कि आप पहले ही इंस्टेंस में उसको किस तरह से खत्म करना है, उस टेंडेंसी को खत्म करना है, वो आई थिंक सीखना चाहिए. दूसरा, दूसरों से सीखना कंटिन्यूसली, दूसरों के एक्सपीरियंसेस से सीखना. लर्निंग कभी खत्म नहीं होती.
वो चीज हमेशा याद रखना, reading relevant books, upgrading your knowledge, keeping yourself abreast with things. At the same time, be self-aware and be mindful of your surroundings. These are few things which actually come to my mind. Yeah. जसवंत जी, लुकिंग टू द फ्यूचर में आप क्या कुछ चेंजेस ऐसे देखना चाहते हो या होप करती है कि ऐसे चेंजेस हो इन टर्म्स ऑफ जेंडर रिप्रेजेंटेशन एंड लीडरशिप इन द डेवलपमेंट सेक्टर? देखो, these might be, I mean, I would be utopian in saying that. I hope that, we have many more women leaders, leading the organization from the front. Right. And, मैं चाहूंगी कि लोग देखें कि उनकी लीडरशिप क्वालिटीज क्या हैं, किस तरह से उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को और आगे बढ़ाया है. And I would want the world to know that we are actually remarkable. Yeah, that's all. Right. So true. So thank you so much, Jaswant ji, for inspiring us and sharing your journey with us today. It has been a pleasure talking to you. Thank you so much. Pallavi, it has been nice talking to you as well, I would say. Yeah. Thank you. Thank you, Jaswant ji. You heard Ms. Jaswant Kaur, a recognized development sector leader, sharing her story and experiences with us. We will be back with another interesting episode of She Leads the Way next week. Till then, take care and stay safe.